हाउ डू वी नीड टू राइट ओवरव्यू व्हेन इट कम्स टू राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए रिपोर्ट राइटिंग होती है. ओके, यू नो फॉर रिपोर्ट राइटिंग ओवरव्यू लिखना है, समरी लिखना है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओवरव्यू एंड समरी? यू गेट कंफ्यूज्ड इन दिस थिंग. सो आई विल एक्सप्लेन you everything in detail in today's session. So just watch the video till the end. You'll understand about overview. You'll understand every single thing related to overview. So let's get started, guys. Basically यहाँ पे I'm talking about overview. Overview and summary, two names for giving the crux of the report writing. Okay, so overview भी हो सकता है, summary भी हो सकता है. But when it comes to overview, so overview where should we write? We should make one paragraph after introduction. Okay, so once introduction is done, we'll make one paragraph after introduction for overview. Okay, so there is always 4 para structure. So first will be intro, second will be overview, okay, third body paragraph 1, and then body paragraph 2. Okay, intro, overview, body paragraph 1, body paragraph 2. This is something you need to do. So overview क्या कहाँ आ रहा है? After intro. But guys, when I'm talking about summary, so where will I write summary? For summary, I'll just follow the sequence of intro, then BP1, BP2, and summary. But guys, we'll write either of two. We'll not write overview and summary both in writing task 1. Either we'll write summary or we'll write overview. इसी से ही आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ आएगी कि how do you need to do it. Okay, clearly, basically clearly explained this thing. So intro, overview, body paragraph 1, body paragraph 2. बट अगर समरी लिख रहे हो सो इंट्रो, समरी हमेशा लास्ट में आती है, ओवरव्यू है. दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम ही, क्योंकि समरी में भी मैंने क्रक्स ही देना है एंड ओवरव्यू में भी मैंने वही बताना है. जो मेजर थिंग आपको दिख रही है, मेजर कंपैरिजन दिख रहा है या मेजर कोई पार्ट दिख रहा है, डैट ओनली आई विल बी एक्सप्लेनिंग. बट अब ये जो ओवरव्यू है ये कहाँ कैसे लिखना है? लेट्स से वी हैव अ डायग्राम. ओके, फॉर डायग्राम हाउ विल वी बी राइटिंग ओवरव्यू? सो बेसिकली इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो. यू विल जस्ट स्टार्ट विद ओवरऑल क्लियरली. आप बाकी के सेंटेंस पे फ्रेम करो, उसे कॉम्प्लेक्स बनाओ, उसे बेटर करो, बट फर्स्ट वर्ड ओवरऑल या फिर इन समरी से ही स्टार्ट करो. सो व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद ओवरऑल इट इज एविडेंट दैट द स्कूल एरिया वाज हियर. व्हाट द डायग्राम इज एग्जैक्टली, पहले डायग्राम को समझो गाइज. सो देर इज दिस डायग्राम जिन्होंने 1980 में बताया हुआ है कि हाउ वॉज द स्कूल. सो स्कूल वॉज टेकिंग हाफ द एरिया, टोटल हाफ एरिया किसका था? स्कूल का था. देन 1/4 वॉज डेडिकेटेड टू कार पार्क एंड द रिमेनिंग 1/4 वॉज फॉर स्पोर्ट्स फील्ड. ओके, दिस वॉज समथिंग इन 1980. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2000, सो व्हाट हैपेंड इन 2000? हुआ क्या था कि स्कूल एरिया जो था एक्सपैंड हो गया था. ठीक है, प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स फील्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्कूल एरिया 2000 में, 1980 में इट्स लाइक दिस ओनली, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2000, सो एज्यूम कर लेते हैं कि स्कूल एरिया इज लाइक दिस. ओके, एंड स्पोर्ट्स फील्ड एंड कार पार्क, ठीक है, हैव बीन डिमिनिश्ड टू हाफ. स्पोर्ट्स फील्ड 1/4 से 1/8 एरिया में आ गई है. Same is with car park. So this total area is for school only. School premises, school building के लिए this is dedicated for. This is car park and sports field. So now what am I doing? Here it's the diagram 1980, 2000 and 2020. Let's say they have told about 3 years, 1980, 2000, 2020. So if it's 2020, so what will I be doing? I'll be writing this. But if it's not 2020, it's 2019. So matlab everything is in past. So 2000, 2019, 1980. But it's like if the year difference is of this, then we'll say ki it has been expanded. The total area has been increased now. Presently the area is this. So presently क्या situation है, that will be telling. Because when we are talking about future, we'll be using is expected, is predicted. But when we are talking about past, we'll be using was, or we'll be using past indefinite tense, we'll be using has plus verb की third form or had plus verb की third form. Okay, but present में we'll be using has, have. Clear. Past में we'll be using was,
Okay, present में we'll be using has have, past में along with past we'll use verb की second form as well, past indefinite में. Okay, अब इसे लिखना कैसे है? ओवरऑल इट इज एविडेंट, मतलब कि ये विजिबल है, इट इज क्लियरली विजिबल, इट इज एविडेंट दैट द स्कूल एरिया वॉज एक्सपेंडेड. अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि पास्ट में है सब कुछ, 1980 2000, एज्यूम यही कर लेते हैं कि वी हैव 2 years ओनली, 1980 एंड 2000, सो एवरीथिंग विल बी इन पास्ट. Overall, it is evident that the school area was expanded. So what has been done? It is evident that the school area was expanded. So it has been expanded. Obviously, it is the school area. Comma, and the areas for the playground and sports field. Okay, so playground and sports field. अब वहाँ पे कार पार्क था, बट यहाँ पे कार पार्क हट गया है. लेट्स से कि हमने कुछ ऐसा कर दिया कि एरिया जो है हमारा कार पार्क का एंड स्पोर्ट्स फील्ड का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. इंस्टेड ऑफ प्ले ग्राउंड हम यहाँ पे कर देते हैं कार पार्क फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. So the area of the car park and sports field contracted. ठीक है, तो एरियाज क्या हुए? कार पार्क भी और स्पोर्ट्स फील्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गए. कॉन्ट्रैक्ट हो गए ना, साइज कम हो गया. ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ ऑफ द टोटल साइज. सो हाफ था टोटल साइज उनका, वो था, सो कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ लिख सकते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, सो फॉर द एरियाज अब हमने किस तरीके से एक्सप्लेन करा? ओवरऑल इट इज एविडेंट दैट द स्कूल एरिया वॉज एक्सपेंडेड. ये कि दिख रहा है कि स्कूल एरिया एक्सपैंड हुआ. ठीक है, एंड द एरियाज फॉर द कार पार्क एंड स्पोर्ट्स फील्ड कॉन्ट्रैक्टेड. जो एरियाज हैं कार पार्क के और स्पोर्ट्स फील्ड के, वो क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हो गए. सो वहाँ कार पार्क एंड स्पोर्ट्स फील्ड है, यहाँ पे भी कार पार्क एंड स्पोर्ट्स फील्ड है. सो ये क्या हो गए? ये हो गए आपके कॉन्ट्रैक्ट हो गए, हैज contracted to half. The areas for the car park and sports field has been contracted to, had been. ठीक है, यहाँ पे आ सकता है had been contracted to half. If you want to change it, we can write even contracted. और अगर मैं चाहूँ इसे change करके had been contracted to half. ठीक है, सो दिस इज द वे वी कैन मेंशन. ओवरऑल इट इज एविडेंट, दिस इज द परफेक्ट ओवरऑल ओवरव्यू जिसे हम बोलते हैं. ऑब्वियसली द लेंथ इज सेम फॉर ओवरव्यू एंड समरी. मैं रेकमेंड करती हूँ व्हेनेवर यू आर राइटिंग ओवरव्यू एंड समरी, आई विल रेकमेंड यू टू राइट समवेयर अराउंड 25 to 30 words. डू नॉट राइट लेस देन 25 to 30 words फॉर ओवरव्यू और फॉर समरी. बट इफ यू आर राइटिंग ओवरव्यू, डू नॉट राइट समरी. इफ यू आर राइटिंग समरी, डू नॉट राइट overview. Another thing guys, we'll be writing overview only for 5 of our report writings. Okay, so bar graph, line graph, diagram, pie chart and tabular chart. We'll be writing overview for these 5 only, as well as summary also for these 5. We'll not be writing overview and summary for flow chart and process chart, because वहाँ पे already we are explaining each and every process. So there will not be saying, we cannot mention that the last stage is very important. Without any stage, the process will not be completed and will not be getting the product. So obviously that we cannot write. So I believe आपको समझ आ गया होगा the way you need to write overview. Okay, so just focus on writing overview and summary, और उससे आपको basics clear हो जाएंगे. I'll definitely make one more video related to bar graph and line graph, where I'll be explaining कि how do you need to write overview for bar graph and line graph. Today I'm explaining, I have already explained diagram. So I think आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. In case आपको कोई भी डाउट है summary और overview में, तो there is already one video for summary and overview. What is the difference between summary and overview? You can go through that video. I'll just add the link on the screen. So you'll see the link on the screen and you will actually get to know the difference about that. Guys, those who are preparing at home, last thing for you all, those who have been preparing at home, I'll recommend you all to go through the videos regularly. Make it a point that you make your own notes. Just make your own notes. These notes will help you a lot in understanding every single concept. So you can just do this and you'll definitely get your desired score. So thanks a lot for watching the video. If you really like the way I teach, then subscribe my channel, and if you have already subscribed it and you have been watching me for a long time, thanks a lot for your love and appreciation. Thank you guys.